Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar has reached the Cooper Hospital. That's where the post-mortem is taking place. Let's listen in to what the Deputy Chief Minister is saying. एक आपलंसं करण्याचं काम करायचा आणि हर उन्हाळी तुम्हाला आठवत असेल त्यांच्या स्वतःच्या त्यांनी इफ्तार पार्ट्या ज्या करायचा तर त्याच्यामध्ये सगळ्या आणि त्याच्या सगळ्या क्षेत्रातले सिने इंडस्ट्री असेल तुमची इंडस्ट्री असेल उद्योगधंदे सगळ्या क्षेत्रामध्ये त्याचा अतिशय चांगले संबंध होते मित्रत्वाचे संबंध होते आणि फार म्हणजे मला तर अजूनही विश्वासच बसत नाही की बाबा Industrialists, Bollywood people, film personalities. I am still in a state of shock and cannot believe that he has passed away and is no longer with us. We shared very good relations with the family also, and he had good political relations with other parties and people as well, irrespective of the political differences and the ideologies. It got late because the body came only in the morning for post-mortem, so it will be done very shortly. कल जो घटना हुई बम्बई में वो हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है कि ये घटना हुई है लेकिन हमारा एक नेता बाबा सिद्दीकी It is highly unbelievable that something of this sort can happen in Mumbai. Our leader, who has been working in politics for a very long time, a tall leader, and started off very early and was associated with Congress initially, and even as a Congress MLA, for 3 years, he was the MLA from the Bandra West constituency, winning and doing some fantastic work for the people of the constituency, be it in health, education or improving local infrastructure. I have always admired his good work. He was always a helpful person who would take interest in knowing what the issue is and trying to resolve and find an amicable solution for the people who generally approached him. The police acted swiftly, registered a complaint and arrested 2 persons in connection with this shooting incident. Five teams formed by the crime branch has gone to different locations, various different locations across India to look for the third accused. और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने The Home Minister Devendra Fadnavis is personally looking into this case. The reason behind this is unknown yet, but we will find out very soon. और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा सरकारी At 8:30 today evening at the Bara Kamrasthan, his funeral and other last rites will take place. गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना और उसके बारे में और भी जो भी
तो ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे। उनसे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर इसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया। और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे। उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे। लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। थैंक यू। Ajit Pawar extending his condolences to the family, saying that the police is in constant touch with Devendra Fadnavis, the Deputy Chief Minister. It's a case that is being looked at very closely by the government in charge. As far as the attack that the government is facing from the opposition, well, nothing very substantial coming from the Deputy Chief Minister. The only update that he shared with us with regards to the investigation was that it's happening in full swing, and the prime task at the moment of the police is right now to nab the third accused. Let me go across to Dev. Dev, for those of our viewers joining us right now, could you just sum up what exactly did the Deputy Chief Minister say? Well, first things first, Ajit Pawar said that this matter is anything but being taken lightly at this point in time. Several specific instructions have been also given to police officers to pay attention and heighten law and order. However, he said that the opposition's job is to attack. They are bound to do that, but our job is to pay attention to the dwindling law and order. We are trying to tighten that, and we are definitely working on that at this point in time. But 8:30 in the evening, the funeral will be conducted. And however, he said that a tall leader, who commanded so much respect, irrespective of his political influence or ideologies, he was always a decisive factor, uniting two people from two different rival parties. Also, he had immense influence in the industrial circles, in the Bollywood and, the acting circles of Mumbai. He also knew the high and mighty, a very social person, someone who was very pragmatic and also took things in his stride in a very light way. In fact, 1977 he had started as a youth Congress leader. In 1999 he won from the Bandra West constituency, the Congress party again. So in fact, in the Bandra East and West, certain areas he wields immense influence. He did quite a bit to improve the local infrastructure, help out with people who had issues in the health and education sector as well. He took up some very key issues, fighting for the people. The people really adored him and loved him. Most of who have gathered right now at the Makwa Heights building, which is his residence, which is where his body will also be placed. I had said something in the earlier live as well, to pay your last respects. But however, Ajit Pawar also said that several different teams have been formed under the crime branch itself, and they're being sent to Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Delhi and different parts of Maharashtra as well. But however, in terms of additional information, what we know is that Dharmaraj, the 19-year-old, is from Bahraich in Uttar Pradesh, and Gurmail Singh, the 23-year-old, hails from Kethal in Haryana. Both of them, Mumbai police sources have confirmed that do not have a criminal past or any kind of history of that sort. Their first time involved in this kind of a crime or incident.
In fact, like I mentioned earlier as well, that the third accused who is currently on the run, and several teams are trying to trace him based on the CCTV footage that is available with the police. Dave, at this point before we get into, before we give our viewers a close view of what is it that the investigation looks like, I just want to go back a bit and redraw for them what exactly are the events that panned out yesterday. Now, NCP leader Baba Siddique died after being shot by 3 assailants in Mumbai's Bandra. This is how and where it all started. He was then rushed to the Leelavati hospital after being hit by multiple bullets in the stomach and on the chest. He later then succumbed to injuries as he was taken to the hospital. The Mumbai Police Crime Branch claims that during interrogation, the accused claimed to be from the Lawrence Bishnoi gang. The accused were doing recce of the area for the last 25 to 30 days. All 3 accused, in fact, came to Bandra East shooting spot by an auto rickshaw. The police suspects that there was someone else also who was providing information to the accused. Sources in the Mumbai police also telling us that the 2 arrested were mere shooters and that the third person on the run was the one who took the contract of killing Siddique. Cops are yet to know who and why the contract was given to kill Siddique. The motive over there essentially is still left to be established. But let's give you more. Haryana and the Uttar Pradesh police have also been alerted. Chief Minister Shinde has directed the police officials to arrest the third absconding suspect as soon as possible and take the strictest possible action. Today, National Congress Party Ajit Pawar faction leader got shot and he got attacked, and in that attack he died. Right now we are on the spot where you can see the police is investigating, and the 6 rounds of 6 bullet shells can be seen. Here, as you can see, the marking has been done by the police, and the forensic team also reached here. They are investigating this whole incident. Baba Siddique's party office is here only, and from his office he was heading towards his house, but at that time when he was in the car, the attackers came and they started firing. Police nabbed the 2 suspects, out of which one attacker was carrying 2 loaded magazines. That means they were fully prepared for this attack and they were well planned. The third attacker is absconding and police is right now in search of him. The case has been given to the Mumbai Crime Branch and right now they are investigating this case. With camera person Rohan, this is Dipesh Tripathi for India Today, Mumbai. 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर भंसालकर जी ने मुझे कहा है और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई। I'm going to my colleague Vidya, who's tracking the story for us. Vidya, in terms of which unit is looking at this particular case, do you have any insight? Also, can you tell us what exactly is the prime focus in the overall investigation at the moment? Well, of course, the focus is the 2 accused who had been arrested immediately from the spot of the incident, and that's one of the reasons why the 2 accused. If I can just show you right now, the police personnel are here on guard. This is the court where the accused will be brought here in some time, and the police will be seeking their further custody. Remember, interrogation of these 2 accused and the fact that whether they received any calls from the higher ups in whoever
was instructing them. That's extremely crucial, and that's to fact check as to whether what they are saying is true or not. So different teams are being activated across the state. The officers from here have spoken to their counterparts in Haryana as well as in Uttar Pradesh and try to find out if what they are saying is right or not. And remember in previous case where Bishnoi gang was involved in the Salman Khan firing case, remember these were poor people, extremely poor because of the fact that one of the accused in his statement while seeking bail had even said that because he had been given 500 rupees and had been promised some money, one of the reasons why he got involved in this. So there are these people who are actually been arrested, they really do not have a background of or any criminal antecedents, and that's one of the reasons why the Mumbai police was never able to track down as to why, who was planning, what was being done. These people just appeared like any other folks right outside when the incident happened. It was only after the incident actually took place that everyone got involved, the investigation really started. So as of now, interrogating these two accused and trying to find out what they are saying is right or not, all that is something that the Mumbai police has to do, also apart from collecting other evidences which could lead them to the other accused and mainly the conspirators as to who really planned this out, who and what was the reason why this entire incident happened. There's big news that's coming in right now. Big news coming in right now with regards to the Baba Siddique killing. The third shooter has been identified by the crime branch. This is something that's been confirmed to India today. 15 teams, in fact, of the Mumbai police crime branch was sent to different states. They sent to MP, they sent to UP, they sent to Haryana as well. And now a big breakthrough in the investigation. Each shooter was given, in fact, rupees 50,000 for their expenses. The handler is yet to be identified. All three were living in a rented house in Kurla for the last 1 month or so. These are details exclusively with India Today right now. Big development in the case as the third shooter has now been identified. As the investigation continues in the case, multiple developments now coming forth. 50,000 rupees, that's what was given to all three of them involved in the case to cover up for their expenses. The handler, where the police is still trying to identify who potentially the handler could be, and all of them were living in a house that they rented in Kurla for the last 30 days. This then essentially tells us that for 30 days nearly they were planning to For 30 days, they were nearly planning this attack, which they executed on Saturday. जिस आरोपी ने उन पर हमला किया था और जिसे पुलिस ने पकड़ा था, जिस जगह से पकड़ा था, हम उस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं। यही वो जगह है जहां पर पुलिस ने उसे पकड़ा था। गोली चलाने के बाद इन जो फेंस है यहाँ से कूदकर जो दूसरा अभियुक्त है वो यहाँ पर आ गया था और यहीं पर इन झाड़ियों के पीछे छुपा बैठा था। पुलिस और लोग जब उसका पीछा करते हुए आए तो उन्हें पता चला कि वो इस प्रीमाइसेस के अंदर है और जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई तो उन्होंने उसको वहां से अरेस्ट किया। जब उसको पुलिस अरेस्ट कर रही थी और लोग भी जब पुलिस के साथ थे तो वो यही कह रहा था कि मुझे मारो मत, मुझे मारो मत, और उसके पास बैग थी। और अब फिलहाल पुलिस उस तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है जो इन दोनों के साथ था। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई। Big development in the case as police swung into action. The third accused in the case has now been identified by the Mumbai Police Crime Branch. There are teams in three different states as of now. We're learning that rupees 50,000 was given to each of those who executed the killing yesterday, and the cops
do in fact believe that there could be the involvement of a fourth individual as well, a fourth individual who was giving them local information as they carried out the attack. I want to go across to Arvind Oja, who has more details on this story. Arvind, एक चौथे और इंसान की यहाँ पर चल रही है बात कि ये रूल आउट नहीं करा जा रहा है कि एक फोर्थ असेलेंट भी यहाँ पर हो सकता है इस किलिंग में इन्वॉल्व. क्या उस फोर्थ इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना अब पुलिस का सबसे बड़ा अगला चैलेंज होगा? तीसरा आइडेंटिफाई हो गया है, चौथे को आइडेंटिफाई करना अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा. देखिए, किसी को भी आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल फोन का जाहिर सी बात है ये इस्तेमाल कर रहे होंगे. जो भी इनका हैंडलर होगा वो मोबाइल फोन से इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा. मोस्टली जो ये गैंगस्टर हैं ये नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल का, व्हाट्सएप चैट का इस्तेमाल नहीं करते, सिग्नल ऐप पर बातचीत करते हैं. जैसा कि सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी उसमें शूटर्स की जब मोबाइल फोन डिटेल निकाली गई थी तो सिग्नल ऐप के जरिए ही बात कर रहे थे. और सोर्सेज का ये कहना है कि 3 शूटर जरूर होंगे, लेकिन इनको पूरी तरह से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया गया होगा. एक पर्सन वो होगा जो इनको आर्म्स इन तक पहुंचाया होगा. तो ये जो मोडस ऑपरेंडी, इसमें कई लोग शामिल हो सकते हैं और इस वजह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुंबई, इन तमाम जगहों पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है. हैंडलर्स कौन होगा ये कुछ देर बाद क्लियर भी कर पाएगी. जब इनके मोबाइल फोन को खंगाला जाएगा तो उससे काफी कुछ क्लियर हो सकता है. अब जो हैंडलर है, क्या वो नाम बदल कर इनसे बातचीत कर रहा था? वैसे पॉसिबिलिटीज कम है, क्योंकि अगर इस तरह का कोई शूटर होता है अमूमन, और अगर वो किसी गैंगस्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो नाम आइडेंटिफाई करके ही फिर उस गैंग के लिए काम करते हैं या उसके साथ एसोसिएट होते हैं. तो 3 लोग जिसमें 2 अरेस्ट हो चुके हैं, एक एब्सकॉन्डिंग है, उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है. और जो हैंडलर है उसके बारे में भी जल्द खुलासा हो सकता है. और अभी तक जो जानकारी आ रही है और अब एजेंसियों ने भी कंफर्म करना शुरू कर दिया है कि जो बाबा सिद्दीकी है, उनका जो मर्डर हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही हाथ है. जिस तरह की डायरेक्शन मिल रही है, जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी है, जिस तरह का वेपन यूज किया गया है, अमूमन ये सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई एंड उसकी जो कंपनी है, उसके जो शूटर्स हैं वही इस्तेमाल करते हैं. तो अभी इन्वेस्टिगेशन का फर्स्ट स्टेज है, जिसमें जो अक्यूज है वो मुंबई में कहां पर रुके हुए थे, कितने महीने से रुके हुए थे, ये सब जानकारी मुंबई पुलिस जुटा रही है. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में जो हैंडलर है उसको आइडेंटिफाई करने में मुंबई पुलिस को बहुत दिक्कत आने वाली है. 3 ऐसे एसोसिएट हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो पूरी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं. तीनों ही अमेरिका में हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, दूसरे नंबर पर गोल्डी बरार और तीसरे नंबर पर राजस्थान का वांटेड गैंगस्टर रोहित गोदारा. ये 3 ऐसे गैंगस्टर हैं जो इंडिया से वांटेड है, अमेरिका में बैठे हुए, और यही ऑपरेट कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग को. सलमान खान पर जो अटैक हुआ था, उनके घर पर जो अटैक हुआ था, उसको भी इन तीनों ने ही अंजाम दिया था. और सीधे जो हैंडल कर रहा था उस पूरे ऑपरेशन को वो अनमोल बिश्नोई था. तो हैंडलर कौन है, इसको आइडेंटिफाई करने में बहुत दिक्कत मुझे नहीं लगता है कि क्राइम ब्रांच को आने वाली है. अभी किस तरह से ये पूरी प्लानिंग की गई, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया गया, फोकस इसी पर है. कौन कौन लोग और इसमें शामिल हैं, क्या मुंबई में कोई था जो इनको पूरी तरह से शेल्टर प्रोवाइड कर रहा था, डायरेक्शन दे रहा था, ये सारी चीजें मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है. और अभी इन्वेस्टिगेशन उसी तरफ जा रहा है. अगर हम पिछले कुछ किलिंग्स की या पिछले कुछ हादसों की बात करें हम अरविंद, तो प्राइम हैंडलर कौन रहा है, किसी तरह का कनेक्शन इस केस में भी दिख रहा है क्या हमें? सुन पा रहे हैं आप अरविंद? जी. मैं आपसे पूछ रहा था क्योंकि हैंडलर अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया अभी तक. पिछले अगर कुछ केसेस की तरफ हम नजर डालें तो क्या हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस केस का भी पिछले मोडस ऑपरेंडीज या पिछले
कुछ अटैक्स जिस हिसाब से कैरी आउट हुए हैं, कि किस हैंडलर का लग रहा है ये काम हो सकता है? तीन ही है आपको बताऊं। गोल्डी बरार जो अमेरिका में बैठा हुआ है, इंडिया से भी वांटेड है, कनाडा से भी वांटेड है, जिसने सिद्धू मूसेवाले का मर्डर एग्जीक्यूट करवाया था। नंबर 2 पर है अनमोल बिश्नोई, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है, जिसने सलमान खान के घर पर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जब फायरिंग हुई थी, उनके शूटर्स को वही पूरी तरह से डायरेक्शन दे रहा था। उसकी कुछ ऑडियो कॉल भी मुंबई क्राइम ब्रांच के हाथ पे लगी थी। और तीसरे नंबर पर आता है रोहित गोदारा, जो राजस्थान का गैंगस्टर है। ये तीनों ही अमेरिका में बैठे हुए हैं और यही ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। एजेंसी के सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया कि इन्हीं तीनों को टास्क है सलमान खान पर अटैक करने का, और उन्होंने कई बार इसकी प्लानिंग भी की है, 2 बार रेकी की है, तीसरी बार प्लानिंग को अंजाम दिया है, गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अटैक कराया है। इतना ही नहीं बल्कि कनाडा में जो गिप्पी गेरवाल है पंजाबी सिंगर, उसके घर पर भी अटैक कराया, एपी ढिल्लन के घर पर भी अटैक कराया। और ये दोनों पंजाबी सिंगर के घर पर अटैक कराने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट भी डाला गया कि ये दोनों सलमान खान से ज्यादा करीबी हैं, सलमान खान से दूर रहो, इस तरह के मैसेजिंग दी गई और इसलिए फायरिंग कराई गई थी। तो जहां तक एजेंसी के लोगों का मानना है कि अगर लॉरेंस बिश्नोई का इस पूरे मर्डर में हाथ है, जो मुंबई पुलिस के सोर्सेज कह भी रहे हैं, जो शूटर्स हैं, तो ये 3 ही नाम सामने आ सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, गोल्डी बरार और रोहित गोदारा। इन तीनों में से कोई एक हैंडलर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज अनमोल बिश्नोई की है, क्योंकि वो पहले भी 2 शूटर को हैंडल कर रहा था जब जिन्होंने गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर पर फायरिंग की थी। अब ये देखना होगा कि इन तीनों में से किसको मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम आइडेंटिफाई करती है, कौन ये इन तीनों में से ये दोनों शूटर्स हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहा था। लेकिन आप एक चीज समझिए, ये जो शूटर्स हैं इनको बहुत कोई जानकारी होगी नहीं, ये यंगस्टर हैं, और जो बिश्नोई गैंग है वो इसी तरह के गैंगस्टर को टारगेट करता है। सोशल मीडिया के जरिए इनको पिक किया जाता है, इनको रिक्रूट किया जाता है, उसके बाद सोशल मीडिया से ये सिग्नल पर लेकर आते हैं, उनसे लंबी बातचीत होती है, उनको मोटिवेट किया जाता है। बहुत हद तक तो ये जो शूटर्स, इनको ये मालूम भी नहीं होगा कि ये किसका मर्डर करने जा रहे हैं, उस शख्स का कितना बड़ा प्रोफाइल होगा, उसके मर्डर से महाराष्ट्र में क्या रिएक्शन आएगा। इनको बस एक टारगेट दिया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं, पिक्चर भेजी जाती है और उसके बाद रेकी करने के बाद जो टारगेट है उसको अंजाम दिया जाता है, उस क्राइम को कमिट किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये शूटर्स से ज्यादा वो हैंडलर है जो लगातार। एक मिनट रुकिएगा, मैं अपने दर्शकों को जो लेटेस्ट विजुअल्स इंडिया टुडे के पास आ रहे हैं, आई वांट टू शो आवर व्यूअर्स दोज विजुअल्स दैट इंडिया टुडे इज गेटिंग राइट नाउ। दीज आर एक्सक्लूसिव विजुअल्स विद इंडिया टुडे ऑफ द सेकंड अक्यूज्ड हु हैज बीन नैब्ड बाय द मुंबई पुलिस। मोबाइल बंद कर, चलो अरे नहीं पकड़ लिया, आप लोगों ने पकड़ लिए। देखिए चलो मोबाइल बंद कर, चलो अरे नहीं पकड़ लिया, आप लोगों ने पकड़ लिए। देखिए मोबाइल बंद कर, चलो अरे नहीं पकड़ लिया, आप लोगों ने पकड़ लिए। देखिए On your screen are visuals of the second accused that has been nabbed by the Mumbai police. We also have eyewitness accounts. Let's listen in to what the eyewitnesses had to say during the time that the shootout happened. हम इस वक्त उस जगह पर मौजूद है जहां से दूसरा अभियुक्त पकड़ा गया था और हमारे साथ हैं वो प्रत्यक्षदर्शी जिनके सामने वो अभियुक्त पकड़ा गया था और पुलिस उसे अपने साथ ले गई थी। इंदर यादव जी, आप कल यहीं थे, क्या हुआ था और क्या देखा आपने? हम उधर खाना बना रहे थे, उधर से भाग के आया होएगा, तब तक पुलिस वाले आए, बोले चोर भाग के आया, इसलिए आया हम लोग। तो देखा तो 1 बार 2 बार देखा, नहीं देखा, बाद में देखा तो वहाँ अंदर बैठा था, तब मिल गया, पकड़ा गया।
कौन अकेला था या उसके साथ कोई और था, और उसके साथ कुछ सामान देखा आपने, उसके हाथ में कुछ देखा? उसके साथ में कुछ नहीं देखा। हाँ, उसके साथ में बैग था, साहब लोग बैग ले लिए। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा कुछ हथियार या कुछ और चीज आपने देखी? उसमें क्या था, हथियार मैं नहीं देखा। वो लोग बोले हथियार है इसमें। अच्छा। बोले 3 कारतूस है और कुछ। हाँ। और पुलिस जब उसे पकड़ने गई तब वो कुछ कह रहा था? नहीं, वहाँ से बैठा उठ नहीं पाया ना, सब खड़े हो गए। उसके बाद बोले मारो मत, पकड़ के साहब लेके चले गए, मारे नहीं। अच्छा। और कुछ कह रहा था जाते वक्त? नहीं, और नहीं कुछ बोला। किसी ने उसको कुछ अपना नाम या कुछ ऐसा पुकार रहा था, किसी के नाम से चिल्ला रहा था? अब यहाँ नहीं कुछ बोला, वो लोग उधर से, वहाँ मैं नहीं गया उनके पास में। हाँ। ये कितने बजे वह यहाँ आके छुपा 9:30 था? बजे। 9:30 बजे। 9:30 बजे। और आपको पता चला, कब पता चला कि वो क्या करके आया है? क्या उसने कुछ नहीं पता चला। जो साहब लोग आए बोले कि यहाँ आया है, तब देखने के बाद दिखे के बाद वो लोग पकड़ के ले गए। बाद में पता चला कि तो गोली मार के आया है। हाँ। बिल्कुल। तो गोली चलाने के बाद जो दूसरा अभियुक्त है जिसे पुलिस यहाँ से पकड़ कर ले गई, वो इस फेंस को कूद कर अंदर आया और अंदर आके इन झाड़ियों के पीछे छुप गया था। वो तो लोगों ने देखा और पुलिस को जब पता चला तो पुलिस आई अंदर और उसे अपने साथ ले गई। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई, आज तक। Arvind Oja continues to be with us on this story. Arvind, हम viewers को visuals दिखा रहे हैं अभी, वो जो second accused नैब हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स आप शेयर कर सकते हैं viewers के साथ इस समय? क्या लगभग उम्र होगी सिर्फ इसी accused की नहीं जिसके हम visuals दिखा रहे हैं, बाकी दो भी? क्योंकि रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं सामने कि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस शूटर्स नहीं है, ये यंग लड़के हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, इनको रोप इन करा जाता है और छोटी रकम के लिए हायर करा जाता है। अरविंद, मुझे सुन पा रहे हैं आप? Okay, there seems to be something wrong with the line. We'll try and get Arvind back for more on this. But in case you're joining us right now, viewers, those are visuals accessed exclusively by India Today of the time that the second accused was nabbed by the Mumbai police. Remember, investigation is on in the case. It is the prime focus of the Mumbai police now to get those confessions, to get hold of the third accused as well, who, by the way, is still on the run. There's another big update in the Baba Siddique killing that we have for you. Now, sources within the Mumbai Police Crime Branch have revealed that during interrogation, the suspects identified themselves as members of the Bishnoi gang. They had been wrecking the area for approximately 30 days prior to the incident. Reports also telling India Today that all three suspects arrived at the shooting location in Bandra East via an auto rickshaw. Witnesses indicated that they waited at the scene for some time before executing the attack. In the past, the Bishnoi gang has targeted Salman Khan and stated that they consider not only him but all those who are close to him as their enemy. Security has been beefed up after Baba Siddique's murder at the residence of Salman Khan, which is the Galaxy apartment in Mumbai. Now, not just Salman though, other as well who've had any sort of association with him have also been getting similar threats. Not too long back, we saw there was a firing incident that took place at singer Gippy Grewal's residence, at the residence of a certain AP Dhillo as well, after his music video featuring Salman Khan came out. Now, this connection to the Bishnoi gang raises several questions about how such acts are being orchestrated despite Lawrence Bishnoi being behind the bars. Three-time MLA Baba Siddique, he was shot at last night, and since he succumbed to those bullet injuries, immediately after that, the security outside Salman Khan's residence has also been beefed up.
And this is being particularly said because it's being done because Salman Khan was very close to Baba Siddique, and also for the sheer fact that there is no known, threat perception that Baba Siddique had from Bishnoi gang. Because according to Mumbai police, the shooters belong to the Bishnoi gang, and they are the ones who had shot at Baba Siddique. Right, you can see. The police chowki that has been installed now, and also now at this right in front of Salman's residence. Also, there is one adjacent to it. Also, there are barricades that have been put up, and these people, the police personnel here, are trying to ensure that no vehicle really stops here for too long, and there's no crowding that happens. So, of course, every precaution is being undertaken by Mumbai police. Security has been beefed up to ensure that no untoward incident really happens again here. With cameraman Swapnil in Mumbai, Vidya for India Today. Now, India Today is the only channel that confronted Lawrence Bishnoi in June 2022. Although we asked him about the Moosewale killing, he walked away without answering. Take a look. बिश्नोई कुछ बोलना है? सिद्धू को मारा? बिश्नोई आज तक पे बिश्नोई 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 सलमान खान को आपने धमकी दिलवाई हैं? सिद्धू मूसेवाला मरवाया? बिश्नोई News coming in right now. Security has been beefed up outside Mumbai court. Mumbai cops fear an attack on the accused. Security arrangement outside the Mumbai court has now been increased. The Mumbai police is taking extra precautions at the court as they suspect that there could be an attack on the accused. Devesh is there on the ground getting us all those details. Devesh, could you show us what that security arrangement looks like, and do you have any knowledge at the moment about when is it that the accused could be presented before the court? Harshit, Baba Siddique was a mass leader, 3 times MLA. Before that, he was also a corporator from Bandra East. So he had large number of supporters. His son presently is an MLA from the Bandra East constituency, and a large number of people supported Baba Siddique. So there is fear that now that the accused, 2 accused have been arrested and a manhunt has been launched to nab the 3rd accused, and when the accused will be produced in court, they could be attacked by the supporters, and that is why police has beefed up security near the Esplanade Court in Mumbai, in South Mumbai. Regarding the second question, it is expected that by 12 noon or 12:30 p.m. the accused could be produced at Esplanade Court and their custody will be sought. Being a Sunday, it's a holiday court where they'll be produced. So it is expected, what we hear from our police sources, that they could be produced around 12 noon or 12:30 p.m. Where the crime branch officials from Unit 9 of Mumbai Crime Branch will be seeking their custody, will be seeking their remand to interrogate them further. As my colleague exclusively accessed the information, it has come to light that the accused trio were paid 50,000 per head for their expenses, and they had been staying in a rented accommodation at Kurla in Mumbai for around a month. As the modus operandi of Lawrence Bishnoi gang is, they conducted recce before carrying out the attack. For a long time, they kept eye on Baba Siddique's movements, and it is suspected that after conducting recce,
they planned to carry out the attack on Saturday evening, when last evening, when they shot Baba Siddique, and that led to his death. Harshit. Okay, Devesh, thanks for bringing us all those details. There you see the movement around the Mumbai Police crime branch as well, as Devesh was bringing us those visuals. We continue to track the Baba Siddique killing very closely here on India Today, and now we're getting more details in the investigation. Now, police has confirmed that it is a case of contract killing. The police is tracing the mastermind as of now. This is the latest in the investigation that's undergoing at the moment in the Baba Siddique case, killing case. The Mumbai cops have now made their prime priority that of tracing the mastermind. The police have confirmed to India Today that it's a case of contract killing. Let me go across to Devesh, who has more details on this. Devesh, what more can you tell us? Turns out that the prime priority now of the Mumbai police is to trace the mastermind. Harshit, yes, definitely. The reason why they attacked on Baba Siddique, we are talking from yesterday, and everyone who wants to know, but it came to light in a primary investigation that it was a contract killing. These three have been contacted, given a contract to kill Baba Siddique. Now the police is trying to find out third accused as well as the mastermind who is behind this. Now the police in search of the person who contacted these three persons. How they come into the contact, who is the local guy who helped them, who provided all the information related to Baba Siddique. And therefore the police have formed more than 15 teams, including a crime branch, Mumbai Cyber Cell. Harshit. Dipesh, the other thing that I want to know from you is, as far as the number of teams are concerned, is there any details that you have on that front right now? How many teams has the crime unit formed, and which team is looking into what? Any details on that front? Harshit, yes, sir, definitely. Yesterday, the attack took place in the Nirmal Nagar police station jurisdiction, but later on, this investigation of this case went to Mumbai crime branch, and after that, Unit 9 of Mumbai crime branch took the custody of the accused. But right now, the Mumbai crime branch team, anti-extortion cell, is looking in this case, and they are investigating this case because they came to know that this is a contract killing, and monetary terms or extortion terms might be involved in this. So the anti-extortion cell of Mumbai crime branch is leading this case, and they are investigating this case right now. Harshit. Devesh, thank you so much for all those details. This continues to be our top focus here on India Day.